Are we live? Yeah. So we're live, Rohit. So hi everybody. So welcome the YouTube subscribers of WazirX and all the fans of WazirX and crypto. I mean, we have Rohit with us, who is a part of marketing team and who is also a blockchain enthusiast. So we'll be discussing a lot of things today, Rohit. Right? So the first one, I think probably I'll take it up is that probably Rohit. There's a lot of buzz around NFTs, right? And the NFT markets like post record breaking week, right? So they have been it's been a record breaking week for NFTs, right? So what are your thoughts on NFTs? How are they picking up? How do you see their rise in India? NFT's rise in India is going to be amazing. WazirX NFT platform जो हमने बनाया है, that has to grow now. It will grow one of the biggest platforms in the Asia. It will grow one of the biggest platform in the world probably. And मतलब इसका अभी फिलहाल जो the factor in terms of artists and in terms of music is too much. And अभी जो हम लोग ने growth देखा है, that is because of course the news about the kitties and जो इतने सारे NFTs बन रहे हैं, तो इसके ऊपर it's now growing and this will keep on growing in India. So that's a great thing. Yeah. So the thing is that Bitcoin has seen a 30% increase, right? So how do you see that? A lot of people are saying that Bitcoin is not going to increase. Bitcoin is just gone. It's by forgone of currency now. How do you see? Because there has been a 30% increase now in the past few days. Bitcoin has increased, has gone up. थोड़ा बहुत, it's gone up from 30,000 to around 42,000 now, around at the range of 39, 40,000 right now. So all this volatility is there in the market. It keeps going. Things go up, it comes down. All these things are, a part of cryptocurrency space. So the price keeps going up and it comes down also. So this specific price that went up, जो ये वाला price ऊपर गया है, this was because of, more importantly, the reason was because of the short squeeze. Short squeeze basically क्या है कि when a lot of people short the Bitcoin, which means they are going short on the Bitcoin. They are hoping that the price of Bitcoin will go down. The the that is when and if the long position, the buyer, a very big buyer comes in and he starts buying Bitcoin, तो short position वालों को अपना position को close करने के लिए थोड़ा थोड़ा और buy करते रहना पड़ेगा. That is why the price of Bitcoin would keep going up. That's what happened eventually. मतलब start में ऐसा ही हो गया, and then we saw कि for what 7-8 days Bitcoin has just keep closing in. जो उसका ये है, अपना candlestick chart है, वो it's been just going up and up and up since last few days. So it was an amazing event. I think one of the most epic moments जहाँ पे we've seen for consecutively 7-8 days. How many days? So around 7-8-9 days it just kept going up for back and back for the video. So बहुत interesting moment है. And of course now what we have to see is 38,000 39,000 is a very is a good support. What we need to see is ये support के ऊपर Bitcoin रहेगा क्या. This we will explain again जब भी हम लोग chart के ऊपर जाएंगे. I will share my screen. But that's an interesting time right now to be in, कि भाई अभी बिटकॉइन ऊपर जाएगा मूविंग एवरेज के 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही रहेगा. तो बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट है ट्रेडर्स के लिए. पर उसमें काफी लोग मतलब देख रहे हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 40K 42K फ्लक्चुएट हो जा रहा है. तो अभी लोगों का एक्साइटमेंट काफी बढ़ गया है. हाँ, 40,000 अभी तक था, बट अभी वो 39,000 पर है. आई थिंक, या 39,140 पर बिटकॉइन BUSD चाहता है. तो दिस इज समथिंग विच, तो जब भी कोई चीज इतना जल्दी ऊपर जाती है तो वो थोड़ा बहुत नीचे आती है, ऊपर जाने का नीचे आते हैं. दैट्स व्हाट इज द ट्रेंड, राइट? तो दैट विल कीप, दीज थिंग्स विल हैपन. एंड अभी इट इज रेस्टिंग, इट्स कंसोलिडेटिंग द प्राइस. व्हाट वी आर सीइंग इज की वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं है. ये प्राइस जब भी नीचे गिर रहा है तो जितना जब भी परचेस के टाइम पे वॉल्यूम था, तो अभी देखते हैं इन नेक्स्ट फ्यू डेज इज बिटकॉइन एबल टू jump again from its price range of 39,000. Yeah. Right. So I'll take a few questions from YouTube comments, right? So people are asking the burn event, Himachali entertainment burn event July वाला हो गया क्या? हाँ, हो गया है. I mean, let me just tell you. Burn तो हो गया. We burned around what
70 crore rupees ना, 69-70 crore rupees worth of WRX burn हो गया equivalent to 61.2 crores INR. So that's like $7,333 dollars, right? WRX. So that's what we burn, and the fifth WRX burn event is complete. So let me just take another question out here. So Jason is asking, अर्चित भाई ग्राफ नॉलेज सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए. हाँ जेसन सबके लिए इंपॉर्टेंट है. It's been really important for everybody. And yeah, Rohit will be soon taking and explaining graphs. So Rohit, in between, like the Ethereum is being constantly rising, right? So what's the update there? Yes, Ethereum has been constantly rising. I'd like to say hi to Jason. Yes, graphs are ready, are important. We will cover this topic also in the future session. We'll try to cover these things. And of course, Ethereum prices have been rising. We in last 10 days we've seen that Ethereum price has just kept going up. ये प्राइस जो ऊपर जा रहा है ये आई थिंक मैंने अपने आई थिंक 3-4 इयर्स के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे मैंने नहीं देखा है कि इतना इथेरियम इतने जल्दी जल्दी एट एवरी कैंडलस्टिक अगर देखेंगे तो इट्स बीन गोइंग अप. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है. उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इथेरियम के ऊपर जाने के. वन ऑफ द फैक्टर कुड बी EIP 1559 जो अभी जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा. तो बहुत सारी चीजें हो सकती है. इसका भी कैंडलस्टिक एनालिसिस अपन करेंगे इन सम टाइम एंड वी विल सी कि we'll try to deep dive into it. Right. Well, the generic reason for Ethereum rising is like there has been a surge in the NFT market, right? And most of them are also kind of trading through Ethereum. Then there has been a decentralized finance. The DeFi is growing at a much larger pace, like what we all thought, right? So so do you think these factors contribute to Ethereum's rise? Yes. मतलब the अभी what we've seen that these crypto dope kitties is one of the things that went viral, right? अभी इतने सारे requests आए हैं NFTs के लिए that the whole price of the gas fees just went up. So that is one of the reasons. There are other reasons also. जब बिटकॉइन स्पेसिफिकली जब बिटकॉइन ऊपर जाता है मार्केट में तो वो पूरा का पूरा मार्केट को ऊपर लेकर चला जाता है. So whenever because of the dominance, right? Bitcoin dominance is what 50-60% of the whole market, cryptocurrency market. तो Bitcoin ऊपर जाएगा तो सारे करेंसी in general upward trends में चले जाएंगे. Bitcoin अगर नीचे आएगा तो सारे करेंसी in general downward trend में चले जाएंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसका एक बिगर अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है और ऑल्ट कॉइन भी ऊपर जा रहा है मतलब ये तो बुल रहा है. Which means सारे के सारे जो traders हैं they are expecting the prices to go even up and there is FOMO in the market, fear of missing out. तो प्राइस ऊपर जाता रहेगा. तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा भी हो सकता है कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है और ऑल्ट कॉइन यानी कि बाकी के सारे कॉइन्स जो है वो स्टैग्नेंट है, वो नीचे जा रहे हैं थोड़ा सा. इसका मतलब ये है कि जितने ट्रेडर्स हैं वो अपना ऑल्ट कॉइन को कन्वर्ट करके बिटकॉइन में लेकर आ रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं चीजें. लेकिन अभी जो हमें देखने को मिला है वो ये है कि बिटकॉइन भी ऊपर गया है और सारे अदर क्रिप्टो करेंसीज भी ऊपर गए हैं. विच मीन्स वो जो बुलिश जो फीलिंग है जो एक ट्रेडर के अंदर जो आने वाला रहता है जो हमारे में भी अभी आ गया है वो ये है कि प्राइसेस अभी स्लोली और बिल्टअप स्लोली होना शुरू हो सकते हैं. ऑफ कोर्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस. हम लोग फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकते हैं लेकिन ये एक ऐसा जनरल थॉट है सोचने के लिए कि क्या हो रहा है अंडरस्टैंडिंग के लिए. All right. I'll take up a few comments now. Let me just look at the comments. So Petty Reddy asked us that why market entirely dependent on Bitcoin. Bitcoin is the hero of the whole world of cryptocurrency. That is why. Petty Reddy. So if you will be in the space now, what you will realize that Bitcoin initially started all these things. Bitcoin ने शुरू दी क्रिप्टोकरेंसी का जो पूरा डेवलपमेंट है वो शुरू हुआ है फ्रॉम द ईयर 2009-2010 स्लोली एंड स्टेडली बिल्टअप हुआ है. कोई और ऐसी क्रिप्टोकरेंसी है ही नहीं इतने टाइम तक जो अभी तक लाइव रही है, राइट? Bitcoin has sustained itself from the test of time. इतने सालों से 10-11 साल I think also if somebody studies the white paper, the Satoshi white paper, I mean, he can kind of understand what is the kind of invention and innovation Bitcoin is. हाँ, yes. Satoshi Nakamoto का white paper तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो रीड करना चाहिए. कभी अगर ऐसा मोमेंट रहेगा तो हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू भी कर सकते हैं किसी एक लाइव स्ट्रीम के अंदर जस्ट टू Absolutely.
I think maybe for the next time we can do that. That's a great idea. And so, अगर guys, anybody कम्युनिटी के who's अंदर कोई interested into कोई futuristic पूछेगा things and टू डू इट सो वी कैन डेफिनेटली डू इट. यस यस. sure. So there are more questions here. Let me just take one. Yasser Khan asked us कि NFT तो एक image है. So उसका value इतना ज़्यादा क्यों? Don't you feel it's a bubble? एनएफटी एक इमेज नहीं है, मतलब इमेज जैसा चीज तो नहीं है. यासिर भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि एनएफटी का जो it's an image which is connected to an identity, a digital identity, which means वो ownership of that image can be viewed on any blockchain network. अभी इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इमेज बनाकर अपलोड करेगा तो उसका प्राइस ऊपर चले जाना चाहिए. बेसिकली अगर कोई रेनाउंड बंदा अगर कर रहा है अपना इमेज या कोई गाना कुछ बनाएगा तो विच मीन्स दैट इट इज रिलेटिंग इटसेल्फ टू द ओनर, द ओरिजिनल ओनर. बेसिकली अगर मैं आपको बोलूंगा कि चार्ली चैपलिन की अगर अम्ब्रेला को मैं आपको दे रहा हूं तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि वो सच में चार्ली चैपलिन की अम्ब्रेला है क्या. अगर वो सच में है उसकी अम्ब्रेला तो आप उसको थोड़ा ज्यादा पैसा देने की कोशिश करोगे. And this is what NFT is. Agar if you know who the original owner is, so the price of that product may go up. That does not mean कि आपको उसके लिए ज्यादा पैसा पे करना चाहिए. एकदम फोमो में आकर कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए. But NFT is a good thing. Yes. Yeah. वो image नहीं है. हाँ. Right. So Rohit, now I think we should proceed towards, a lot of people are asking, kind of keen on the graph explanation. So why don't you just share your screen and just start explaining like the graph now, the basics of graph. Yeah. Graph paper. Yes, let me try to share my screen here with you guys. Now Rohit will be explaining you the basics of the graph as to how to read the graphs. And so Rohit, you can just go on and explain the very basics of how a layman can start reading these graphs and what he should know and how he can go about it. Yes, can you see my screen by the way? Yeah, I can see it. It's visible. Awesome. Okay. तो अभी हम लोग जो ग्राफ देख रहे हैं दिस इज बिटकॉइन एंड डॉलर चार्ट. सो बिटकॉइन एंड BUSD का चार्ट है. हम लोगों ने इसको टाइम सेट फ्रेम करके रखा है 1 डे के ऊपर. आई जनरली लाइक टू पुट इट एट 1 डे. तो ये सब चीजें जो मैं बताने वाला हूँ दिस इज माय ओन पर्सनल थिंग्स दैट आई डू. ओके, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम सजेस्टिंग एवरीबॉडी टू डू. इट्स समथिंग दैट आई लाइक टू डू फॉर माय ओन सेल्फ. तो 1 डे पर मैंने रखा है इस चार्ट को. और what I have put here is 200-day moving average. बेसिकली मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ देखने का कि अभी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज क्या बिटकॉइन अपना 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा क्या. तो अभी ये अगर हम चार्ट देखेंगे फॉर द सिंस कौन सा डेट है 21 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक तो बिटकॉइन पूरा ऊपर गया है. एंड उसके बाद सिंस लास्ट फ्यू डेज थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है. लेकिन अगर हम लोग वॉल्यूम देखेंगे तो वो कम है काफी कंपेयर टू पीछे का वॉल्यूम जो इतना ज्यादा है. तो अभी फिलहाल ये देखने के लिए इंटरेस्ट होगा कि क्या बिटकॉइन 200-डे EMA के ऊपर जाएगा क्या. अब इसको कैसे लेकर आते हैं बेसिकली हम लोग अगर कहीं भी जाएंगे इंडिकेटर के अंदर तो हम लोग सीधा मूविंग एवरेज टाइप करके वी कैन फाइंड आउट. Rohit, I would like to stop you here. Rohit, yeah. I mean, can you first explain to the layman what this green candle is and the red candle is, like the basic, like the really basic. Yes. So from the basics of what is happening, if you see, एक ही कैंडल को लेते हैं अपन. ये सब चीज जाने देते हैं. सिर्फ एक कैंडल को लेते हैं. On 26 जुलाई 2021 ये हमको ये कैंडल दिख रही है. यहाँ पर अभी अगर आपको दिख रहा है तो एक छोटा सा ये कैंडल के नीचे. तो कैंडल में 4 पार्ट होते हैं बेसिकली. एक ये ओपन, क्लोज, हाई और लो. ओके, तो अभी जैसे हम ये देखेंगे मैं कोई भी कैंडल के ऊपर अगर मैं हवर करूंगा तो ऊपर चार्ट के ऊपर यहाँ पर ये दिखेगा OHL एंड C, विच मीन्स ओपन, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. तो मैं यहाँ पर अगर लेकर आऊंगा चार्ट को तो मुझे दिख जाएगा कि वो ओपन कितने पे हुआ था. 35,400 पर ओपन हुआ था जो कि यहाँ पर करीब यहाँ पे ओपन हुआ था. वो हाई कितना गया है 39,000 पर गया है. तो इतने ऊपर तक गया वो चार्ट उस दिन क्रिप्टो अपना बिटकॉइन. एंड देन वो लो कितना गया जो कि बताया 35,000 के ऊपर तक यहाँ पर भी आया. तो प्राइस ऑफ बिटकॉइन यहाँ से शुरू होकर उस दिन यहाँ पर गया था इतना ऊपर और फिर वो वापस इतना नीचे आया और वो फिर फाइनली क्लोज हुआ है अप्रोक्सीमेटली 37,200 के ऊपर, 200 के ऊपर.
So this is what every candlestick shows, four things. Four. One is when did the candlestick open, वो कभी शुरू हुआ, कभी वो क्लोज हुआ, कितना हाई गया और कितना लो आया, चार चीज बताता है. Right. So And I would like to reiterate that to all the people watching, that if you go on the top left, OHLC, which is O as in open, H as in high, low as in low, and C as in close. Right. This is for a yes, particular data for a particular candle. If you see, Rohit, can you see? for Can you every, show them a yes, candle, like whether it's a yes, yes. red candle or a green candle? So you can So see all then the values there. it, yeah, candle can be, candle कोई red भी हो सकता है, कोई green भी हो सकता है. It can be red or it can be green. If it is a red candle, basically what it means is when it opened, so it opened at a higher price and it closed at a lower price, which means मैं बगैर ऊपर फिगर देखे मैं पता लगा सकता हूँ कि ये वाले कैंडल का जब ये ओपन हुआ था तो ये अराउंड 35,500 पे था. तो हम देख सकते हैं, मैं इस पर अगर लिख रहा हूँ तो 35,597 रुपीज पर था ओपन. वो हाई गया 35,700 के ऊपर, वो लो आया 31,000 तक, 255 रुपीज, एंड वो फाइनली क्लोज हुआ 31,609 रुपीज के ऊपर. तो वो यहाँ पे आया, ऊपर इतना गया, इतना नीचे आया, लेकिन फाइनली इतना क्लोज हुआ, विच मीन्स वो शुरू हुआ था क्रिप्टो ये प्राइस पे और ये क्लोज हुआ उस दिन, दैट डे. वो दिन का क्यों कैंडल बता रहा है, क्योंकि मैंने डे सिलेक्ट करके रखा है. अगर मैं इसको आवर कर दूंगा तो हर कैंडल एक आवर स्टिक हो जाएगा, तो ये 4 आवर का कैंडल स्टिक है. यहाँ पर हम देखेंगे नीचे जैसे ही मैं लेकर आऊंगा तो यहाँ टाइम भी दिखाएगा कि 26 जुलाई 2021 को 20th आवर पे, और यहाँ पे एकदम लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे टाइम भी बता रहा है, वो टाइम जोन बता रहा है. तो ये टाइम जोन भी है यहाँ पर, राइट. तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज की क्या ये कैंडलस्टिक क्या रेंज पे ऊपर गया है और क्या कितना नीचे आया है और फाइनली क्लोज कितना हुआ है. चार चीजों को देखने के लिए कैंडलस्टिक है, इसको जापानीज कैंडलस्टिक बोलते हैं, और ये इस चीज को बता रहा है बेसिकली. All right. All right. All right. All right. Now, what should people do by looking at the graph? I mean, how do they decide on, kind of about the crypto? So the idea to have a look at any candlestick is to try to figure out what is happening. If we see the daily candlestick over here, and if we put in a moving 200-day moving average over here, what we see is that Bitcoin prices has went up from from somewhere around 29,700 to all the way up to 42,000 kb. So this is the price that it has gone up. And now when it went up, there is a little bit of consolidation, and हम लोग का जो 200-day moving average है वो यहाँ पर approximately is at a range over here. तो 37,800 38,000 के रेंज के ऊपर. So हमें ये देखना है कि in the next few days will the price of Bitcoin actually stay in this space. So it needs to stay in this space to be still bullish and try to cover up to come up basically. So एक 200-day exponential moving average होता है, and then there is also this thing, a normal moving average, which is not exponential. Basically it is not tracking the very closely with the price. So अभी हम यहाँ पर अगर आके देखेंगे, this is showing 20 days को 200 day कर देंगे, and style के अंदर जाके we can put a basically yeah. Yeah, sorry. You can put over here, you know, ये रहा 200 day moving average. अब this chart, अब इसको थोड़ा दिखने के लिए मैं इसको थोड़ा हरी कर देता हूँ लाइन को. ये वाली लाइन जो है ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये नीचे वाली जो है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. तो सिंपल मूविंग एवरेज पर अभी तक हम लोग टच नहीं कर पाए. जनरली क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर ट्रेडर्स लोगों को पॉजिटिविटी और एकदम बुलिशनेस तब आ जाएगा जब जब बिटकॉइन 200 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर चला जाएगा. तो वो हमने जब ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया तो फिर एकदम से अब नीचे ही है बिटकॉइन, अभी हम यहाँ पे देखें. तो अगर इन अ फ्यू डेज अगर बिटकॉइन ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, एटलीस्ट 1 or 2 डे कैंडलस्टिक अगर ऊपर क्लोज हो जाता है, so which means that we are still again up for the all time highs or
और ऊपर टू द मून अगर हम जाने का प्लान करेंगे तो सबसे पहला जो बैरियर आएगा वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा. तो दैट इज व्हाट इज राइट नाउ द सिचुएशन. So now, can you also explain, like, kind of what are the essentials of studying a graph? Like, what are the first few things like the person should look at? The most important thing that somebody should look at is the volume and is where the direction is. Generally direction को देखकर we can come to know broadly where the crypto space might go. It is not compulsory कि वो वहां पर जाएगा, but broadly अगर हम लोग अभी तो जितना अगर हम लोग टाइम स्टैम्प कम 1 डे से 4 आवर लेंगे, 4 आवर से 1 आवर लेंगे, अभी 1 आवर का चार्ट देखते हैं तो 1 आवर का चार्ट लेंगे तो हमको उतना क्लैरिटी आता रहेगा कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर जो बड़े बड़े वेल्स हैं जो है उन लोगों का माइंडसेट क्या चल रहा है. तो अब अगर मैं यहाँ पर ये मैंने 1 आवर चार्ट दिया है अभी यहाँ पर सिलेक्ट करके बिटकॉइन का ही, और अभी यहाँ से अगर एक लाइन सिलेक्ट अगर हम करेंगे ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करने तो पैटर्न देखने का अपने को कि पैटर्न कहाँ पर है. कुछ अगर समझ में आ रहा है कि अपने को कि डायरेक्शन कहाँ है तो मैं अगर यहाँ पे देखूंगा तो मुझे ये पैटर्न दिखेगा. मैं ये लाइन अगर डालता हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि बिटकॉइन पहले ये लाइन के ऊपर जाने का कोशिश किया है. नॉट पॉसिबल यहाँ पर भी आया नहीं हुआ, यहाँ पे आया नहीं हुआ, यहाँ पे आया नहीं हुआ. इवेंचुअली एंड फाइनली इतना बड़ा वॉल्यूम आया है और बिटकॉइन ने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया ये लाइन के ऊपर. राइट, अब वो ब्रेकआउट किया है तो अब ये सपोर्ट बन जाता है. जब भी कोई अगर रेजिस्टेंस है तो ब्रेकआउट होने के बाद डायरेक्ट सपोर्ट बन जाता है. तो बिटकॉइन ऊपर आया एंड देन नीचे आकर यहाँ पर सपोर्ट लिया है उसने, एंड देन अगेन सपोर्ट के बाद ऊपर गया है, वापस सपोर्ट लिया है, ऊपर आया. तो अब फाइनली हमको ये देखने को मिला है कि प्राइस फॉर सम लास्ट फ्यू आवर्स बिटकॉइन हैज गॉन बिलो दिस ट्रेंड लाइन. दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, ये शॉर्ट टर्म ही ट्रेंड लाइन है, बट इट हैज गॉन बिलो दिस. सो इन द शॉर्ट रन अभी इसको स्लोली यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, बट इट विल इवन इट if it eventually jumps out of this then we will again go out right of this thing. But ये only 1 hour chart है. अभी अगर इसको हम और थोड़ा डिटेल में अगर देखेंगे तो उसका ट्रेंड हमको यहाँ से भी दिखेगा. सो मल्टीपल डायरेक्शंस अपने को देखने को मिल सकते हैं कि ऊपर कितना है और नीचे कितना है. सो मूवमेंट समझ में आएगा. तो if you are right now over here, so what will I do? I will probably wait, right? I'm not sure कि bitcoin किधर जाएगा. I'm probably waiting that the price again starts going up. It breaks some so the first resistance over here, and if it starts going up, I can expect that maybe it keeps going up in this direction and not come here. If it does not, if it reaches over here, maybe I might close some of my positions, right? But क्योंकि मेरा यहाँ पर मेरे अपना momentum मैंने ले लिया है and I am out. So that's how people can do it. But strategy अपनी अपनी है खुद की. People can decide what they see. For me, जो visibility है कुछ और हो सकता है. For somebody else, it can be something else. So if I just put in another line over here, we can probably create one more line. So ये सब these things can be depending on what the viewer जो trader है उसका emotion क्या है basically. What is a chart? It is just an emotion of all the traders in the country or in the world wherever they're trading. Right? फिर I come back to the daily chart. अभी daily chart के अंदर I will come here. It's generally what I try to do is I generally tend to keep it on daily levels because I don't like to do इतना ज्यादा ट्रेडिंग नहीं मुझे करना है कि मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स भी डाउन होते वक्त फिर अपना प्राइस और भी मैं यू so you think of taking a position 20 times if so, and you take only maybe, and I take only position maybe 5 times, and वो 5 times में से I will win maybe only one time, right? तो मैंने 20 बार सोचा कि मैं ट्रेड के अंदर आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा नहीं. मैं शायद ही 5 या 6 7 बार ट्रेड लूंगा मैं लॉन्ग अपने लॉन्ग या शॉर्ट पोजिशन जो भी है, और फिर बाद में उसमें से शायद ही मैं एक या दो ट्रेड में मैं आई विल बी एबल टू अर्न मनी. बाकी ट्रेड्स के अंदर आई हैव टेकन स्टॉप लॉस लेकर we can reduce our losses basically. But in general what we are seeing is the trend is upwards. थोड़ा 1 or 2 days के अंदर we will come to know that ये प्राइस ऑफ बिटकॉइन 200 EMA के आसपास क्या होता है एंड डज इट क्लोज नियर इट.
If it goes a little bit below it and still comes up, I think it's a bullish sign. तो वो bullish sign है कि वो नीचे आने के बाद वापस ऊपर जा रहा है क्योंकि लोग उसे वो पॉइंट पे परचेस कर रहे हैं. एंड या ये चीजों को अभी यूजर को अपने आप कंसिडर रहना चाहिए. अगर मैं लॉन्ग टर्म देखेंगे तो वी आर स्टिल वे बिहाइंड, राइट. अगर यहाँ पे देखेंगे वी आर एट 64,000, सो द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इज स्टिल अ Rohit, I have लॉन्ग. a question for you while you're explaining this. Why do you think that studying such charts, मतलब इन charts को पढ़ना जो है इतना important क्यों है किसी के लिए? Why do you think कि it's better to know these charts? So if you are a short-term trader, for example, if you are thinking to maybe make some money in a few weeks or in a few months, right? So then looking at chart makes sense. If you are not a short-term trader, basically, if you are somebody who is a hodler who wants to hodl their crypto, so then all these things would not matter. Basically, the price of Bitcoin, if we see on the weekly chart, so it's still way higher. So in the long run, if you are just hodling your crypto, it's just if the price goes down, you should buy it, right? But if you're trying to make money, right, while you are doing this for a for maybe full time, maybe you're spending quite enough time. So then you need to figure out ki, when should I buy and when should I sell. Abhi, if I see over here, this is the price at which Bitcoin around 28,000, 29,000 levels. Bitcoin has been at this, come at this price, and then it has bounced back. So it bounced back way back in January over here. Again, it came back over here and it bounced back somewhere over here in June. फिर यहाँ पे वापस से बाउंस बैक हुआ है एक और बार एंड वापस यहाँ पे बाउंस होने के बाद इट हैज गॉन अप. सो ये सारी चीजें, हाउ विल यू कम टू नो? You will only come to know if you look at the chart. So, and why will you look at the chart? Because you want to buy Bitcoin at certain price and you want to sell it immediately. But this is a risky trade, right? If somebody is buying Bitcoin and hoping to sell it in the short run, he's hoping to sell it at a higher price. So there is a risk factor involved, and that is where to mitigate the risk and to even know कि भाई when should I buy. I will never buy a Bitcoin अगर at a price जब वो 10 दिन 12 दिन से ऊपर 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 ही जा रहा है. Why? Because I know that अगर इतना देर तक price of something goes up, so then it will eventually थोड़ा रेस्ट करेगा. एनी क्रिप्टो करेंसी अगर कोई भी इतना जल्दी ऊपर जाता है तो वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए फिर वापस से कंसोलिडेट होता है. तो वो कंसोलिडेशन है या करेक्शन है, वो कैसे पता चलेगा? हम लोग वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम के अंदर चेंजेस है क्या. हम लोग देखेंगे कि वापस करेक्शन कितनी जल्दी आ रहा है. अगले सपोर्ट और अगले अभी यहाँ पर एक और हम सपोर्ट देख सकते हैं. देखो यहाँ ये प्राइस पर पहले भी जनवरी के अंदर बिटकॉइन ऊपर गया था एंड वापस आया. देखो तो ये बैंडविड्थ, ये इसके अंदर ऊपर गया है बिटकॉइन, नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, और यहाँ पर भी बिटकॉइन नीचे से ऊपर आया है और अब यहाँ पे नीचे आया है, राइट. तो इट इज इंटरेस्टिंग. पिछली बार जब था तो वो 200 डे ईएमए के आसपास नहीं था. इट वाज वेरी बुलिश एट दैट मोमेंट. अभी इट इज ट्राइंग टू काउंटर दिस 200 डे मूविंग एवरेज. once 200 day moving average is over and it is conquered, so there is also then a 200 days simple moving average which is a little higher over here. So वो जब conquer होगा, and basically somebody should look at the chart only to enter into a trade अगर वो short term के लिए, right. अगर आप अभी खरीद के 5 साल बाद देखने वाले हो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. 5 साल बाद देखेंगे तो फिर बिटकॉइन में भी शायद कभी 5 years down the line it may never be under $50,000. You don't know. So in the long run, nobody who's held Bitcoin for more than 3 years has been under a loss. So which means we can safely say that long run के अंदर trading को charts को देखने की जरूरत नहीं. In the short run, it is interesting to see something like this, even if you don't trade. Right. Thanks for the clarity, Rohit. I mean, so basically the graphs are more useful for somebody who is trading in the short term and won't be much of a significance while somebody is in long term, right? That's what we're trying to say. In the long run, fundamentals is more important. Fundamentals like is the price of what is the
अगर बिटकॉइन हाल्विंग होगा या if there's some significant change जैसे इथेरियम में 1559 है, so those things would make more sense. Right. So I would say that all the people who don't have much of knowledge, I think probably first step is to do your own research. I think, and if you are investing in short term, then probably I think, as Rohit says, it's important to know the graph, because this is where which will kind of make a better investment for you. And by saying this, we don't give any financial advices, but we just tell all the people who are interested in crypto to be safe and enjoy the crypto world. So, Rohit, what's up with Ethereum? Can you just go on an Ethereum graph and show us like how Ethereum is being formed? Yes, Ethereum graph, if we see, so this is Ethereum BUSD, basically Ethereum and US dollar chart. Ethereum has been even more bullish. What we've seen in the last few days is that since 21st of July till abhi tak, all the candles of basically all the daily candles have been in an uptrend only. तो क्लोजिंग जो है सारे कैंडल्स का वो पिछले कैंडल से ऊपर ही है, which means it's a very bullish sign. And Ethereum, of course, what we can see is 200-day EMA के तो ऊपर है ही अभी, and it is अभी अगर हम लोग नॉर्मल मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज भी देखेंगे तो भी एक बार देख लेते हैं कि वो कहाँ पर है. I guess in between, I'm just asking the people, like, guys, recommend your topics. If you want to know something, I think you can ask Rohit about it, and you can ask both of us actually. And we are here to explain you like what is the moving average. I mean, Rohit is explaining all the fundamentals, and हाँ, every Monday we are going to be covering these fundamentals as Rohit is explaining them. So please do shoot us all the topics and questions which you want to know from us. yes. तो ये जो जो मोटा वाला जो लाइन है, दिस इज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज. ये सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही है राइट. सो व्हाट वी आर सीइंग इज दैट इट हैज एंड ऑल द वॉल्यूम जो यहाँ पे दिख रहा है इतना मस्त ग्रीन कलर दिख रहा है. वी आर ऑफ कोर्स RSI is around 70 now, and but all in all what we are seeing is that Ethereum has just gone crazy up. It's the realization be by there's EIP 1559, the requirement of Ethereum in DeFi, NFT space, activity इतनी ज़्यादा है crypto Ethereum की, in fact, कि eventually everybody knows in crypto space who's been in the game for a while is that Ethereum will eventually detach from Bitcoin. ये slowly होएगा ही. सो ये आज होगा कल होगा मे बी 2 साल बाद होगा, मे बी नेक्स्ट बुल रन में होगा जब 4 years डाउन द लाइन बिटकॉइन का बिटकॉइन तो वापस हार्विंग होगा. तो दैट विल इवेंचुअली हैपन, बट व्हाट वी आर गेटिंग टू सी स्लोली एंड स्टेडली दिस माइट स्टार्ट हैपनिंग. ये इस तो अभी बिटकॉइन का भी प्राइस ऊपर है, इथेरियम का भी ऊपर है, लेकिन बिटकॉइन थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है और इथेरियम ऊपर जा रहा है. तो व्हाट वी आर सीइंग इज ऑल्ट कॉइन्स आर आल्सो नाउ पिकिंग अप स्लोली एंड स्टेडली. But again, there's a lot of time. The first, of course, the first barrier is this major chunk जो यहाँ पे हमने देखा था at around 3000 levels. इतना बड़ा कैंडलस्टिक एक ही दिन के अंदर जो ड्रॉप आया था, this is going to be a good barrier first of all यहाँ पे at 3000 level. So maybe around this level, this will be a resistance. And once resistance आने के बाद around 3000, maybe it will consolidate for a while, maybe थोड़ा cool down होएगा जैसे सारे क्रिप्टो होते हैं, और फिर slowly and steadily it will start. I have a question here, Rohit. I would just like to cut you in between, and I have questions there. Yeah. So let me just go through these YouTube comments. So I think Sai Mukesh asks us that is RSI the best indicator for buying and selling? So let me just tell him that Sai, I mean, we just started with the fundamentals, but to your question, I think Rohit will answer. So Rohit, what's your answer for him? RSI is the best indicator. So honestly, there's no best indicator. If that was the case, then it would automatically become the worst indicator. Because if everybody knows the secret, then no, then the secret doesn't exist.
So RSI is not a best indicator. It is just a measure to see that jaldi jaldi mein kuch hua hai kya. So what is RSI? RSI is relative strength index, which basically tells us that if somebody buys a lot of crypto in a small period of time, then the RSI goes up. If RSI goes up, we come to know that कुछ हड़बड़ में काम हुआ है ना, जल्दी जल्दी में कुछ काम हुआ है और जल्दी जल्दी खरीदा है. अगर क्रिप्टो बहुत जल्दी जल्दी किसी ने कुछ भी सामान खरीदा है, तो वो स्लोली फिर वो थोड़ा कूल डाउन होएगा. So whenever RSI goes too up, it goes generally the trend is to keep RSI at 70 on the upside and around 30 on the downside, which means if it goes above 70 or 80, it tends to come down. It's a cyclical movement. So that's for the RSI. It's not one thing to check out, right? You need to check multiple things into it. But RSI is one of the things to see if a crypto is bought or overbought or oversold. So a trader can jump in whenever it is needed. Right now, what we are seeing is RSI is at 70 and and just briefly touching or even touched this thing, the 70 or 71 level right now. So what we are seeing is that it has been being purchased since a few days, and it might be in an overbought position. That does not mean that people need to short it now. Isn't it? It's not something the isolation में नहीं देख सकते हम, right? Yeah. Right, then probably Rohit, I think we should close it right now. And probably I say that to all the people who are watching us, then probably एक और tune question into. था. Somebody also asked in the chat, can you try to open Ethereum Bitcoin comparison? That is a great question. Oh yeah, Gimson. I can see that. Yeah, so basically what Gimson is saying is that the Ethereum and dollar chart may not be the right comparison. The ideal way to look at might be Ethereum and Bitcoin, which is probably right. Okay, so what happens is many traders who are in the game since a long time, तो वो क्या देखेंगे? They will check out the price of Bitcoin as compared to any other cryptocurrency. So in the long run, this would be true until and unless Ethereum has gone away from the Bitcoin this whole dominance level. This is true. Why? Because what is the general thought process of a trader? मैं क्या सोचूंगा कि I will take bitcoins, invest it into other cryptocurrency. I will once the cryptocurrency grows, I will convert it back into Bitcoin. So dollar तो उसमें आया ही नहीं. So generally, that is what a big time trader who is trying to maximize his Bitcoin position would think like, right? That's what a Bitcoin maximalist would think like, and that's also true if you look at the long run. What we've seen is that Ethereum and Bitcoin has a even better this thing, क्या बोलते हैं, but correlation together. It's a more right way to look at it. We can have a look at this price also. Let me check at it. And what we see here is also amazing. See, so अगर हम इन अभी ये 1 day का चार्ट देखेंगे, if we see over here that if so basically what they start is this is just dominance game between Ethereum and Bitcoin, right? And जब भी ये चार्ट ऊपर जाएगा, which means that Bitcoin dominance is going down. Why? Relative to BTC, Ethereum is going up. That is what is this chart showing basically. And yeah, so अभी जो हमें देखने को मिल रहा है, what we are seeing is that if we look at this chart over here and we try to put a trend line, we are at peak of where this is, right? Almost, right? So in the next few days, we might come to know कि ये Ethereum does it go up and stay on this line. अगर Ethereum इस line के ऊपर चला गया, so this line will act as a resistance, as a support rather than resistance. So this is also one of the ways to, of course, the most important way, in my opinion, as the trader grows from a stock market trader to into a crypto trader, फिर crypto trader से then he understands कि पूरे community में Bitcoin is the only thing that everybody believes in. So then he would eventually end up coming to a position जहाँ पे they will start looking at what is my Bitcoin holding? Can I grow my 2 Bitcoins into 4? Maybe, right? In the long run, the price of Bitcoin will keep going up. That's what he's thinking, right? So if we look at that, what we are seeing is that there might be a breakthrough over here that we'll only come to know that
once there is the event that has happened. And what we can see is अभी Ethereum and Bitcoin के chart के अंदर RSI is still at 60, so there's a whole lot room to grow, right? There's a room to grow. And MACD के अंदर if we will see that of course it is just coming up. So MACD का ये line अगर divergence अगर ऊपर ऊपर आता है, so then there's even more chance of the prices going up towards the bull side or towards the upside of this thing. So this is also an interesting chart. Of course, when we look at this, the 200-day moving average and exponential moving average is of no concern. What we are just seeing is this support line, which is at 0.055. So interesting. Yes. Right. So I guess then probably we should end it up here. And I request people to submit more topics and kind of terminologies if they want to understand. And I think Rohit and me are going to be giving you the latest news for the week and also explaining the charts. Rohit is going to be explaining you the more fundamentals next week on Monday at 6 p.m. Right, Rohit? So Yes. and So I you think we're guys can going. ask questions, of course, right? The community can ask questions, or they can ask us what is it that they want to see, right? For example, Game Zone is now asking कि ADA chart or उसका dominance बताओ. So we can definitely do that. Slowly and steadily, we'll take questions and we'll try to engage into more engaging conversation. Yeah, So yeah. yeah, Well, absolutely, Rohit. I think it's been a great live stream where people are kind of curious about the graph charts, and I think you've explained them a bit, but I think they're hungry for more. I can see from the comments. So I think next Monday, I think you can explain more fundamentals, and that will be a good way to go about. Till then, yeah, probably yeah. I think thanks for coming on this live stream, Rohit. And it's been a great. And thanks to all the subscribers who kind of took this precious time out of their own schedule and joined us. Yes, please subscribe the button down below and meet us again next week. If you have some questions, please shoot it down in the comment section. Let us know what you guys think, or if there's something that you need us to try, explaining in the next round. Well, absolutely. Thank you, Rohit. Okay, thanks. Bye.